Yeah. So this big O notation refers to asymptotic. Okay. The word asymptotic indicates as n grows or as d grows, which term dominates, or for example, for some algorithm, the complexity is something like n4 plus 5nq plus 4n square plus 3n plus 1000. You have an algorithm that takes these many number of multiplications and additions to compute the output. Right? And someone asks you, what is the complexity? You can tell this the whole, complexity, but or you can say in terms of asymptotic complexity, or as n grows, right? As n grows to infinity, n4 term जिसकी power ज़्यादा है, ये term dominate करेगी, right? So you say that the complexity is of the order n4. You would ignore the other terms because when you plot this, for example, this is a function of n, right? So when you plot this as a function of n, so it grows with n4, something growing. This is f of n, and you also plot n4. The difference between n4 and this f of n reduces to 0 almost. As n approaches infinity, it reduces to 0. और जब n बहुत बड़ा भी है तब भी n4 की टर्म वो dominate कर रही है. n4 is approximating the asymptotic complexity. So n4 will be something like this. Eventually, शुरू में ज़्यादा difference होगा. But eventually it matches. I hope you are clear now what do you mean by this term asymptotic complexity. ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन कोई? इसका टाइट बाउंड भी यही होगा ना फिर, बिकॉज़ एनडी होगा और लाइक टाइट बाउंड ही हो जाएगा ना फिर, ये लाइक बिग थीटा में भी फॉल करेगा और फिर वो टाइट बाउंड ही नहीं है, मतलब यही होगा ना, कंफर्म करना? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होगा. So this we call it asymptotic complexity, or that can serve as a major contributor towards the overall time complexity of the algorithm. Okay, उसके बाद हमने बात की कि computational complexity क्या होती है, that is number of additions and number of mathematical operations that includes additions and multiplications to predict or to compute the output of an algorithm, right? Or the number of computations algorithm takes to give you an output. That is computational complexity. What is storage complexity? Storage complexity refers to how much storage is being consumed by an algorithm, कि memory कितनी ले रहा है, use कर रहा है, or if there are some pre-computations involved for an algorithm, उस pre-computed data को store करने के लिए आपको कितनी memory चाहिए. When we talk about KNN, in KNN, we need to store all the training data to carry out predictions. Okay, for any test point, we compute the distance from every point in the training data, and then we find the k nearest neighbors. It means we need access to all the training data to carry out predictions, and therefore we need to have this training data available all the time. And therefore we say the storage complexity of KNN is d times n. और आपको इतनी बाइट्स चाहिए मेमोरी की, आपको इतनी स्टोरेज रिक्वायरमेंट चाहिए, और the storage grows with the storage grows with n. The storage grows with the number of features, the storage grows with the number of data points. ठीक है जी. Any other questions?
about storage complexity and computation complexity. Zen? यस सर सर इसमें ना जब हम लोग वो आप पॉइंट्स 3 पॉइंट्स बता रहे थे उसमें आपने कहा कि जब आप वो मीडियन ऑफ मीडियन से जो भी हमारी लिस्ट है उसको वो करते हैं तो वो ओ ऑफ एन में जाता है सर उसके बाद जब आप उसमें से के पॉइंट्स पिक करते हैं और नीचे लेके आते हैं तो फिर वो उसको भी आपने ओ ऑफ एन में लिखा हुआ था वो लेक्चर के दौरान सर वो ओ ऑफ के नहीं होना चाहिए जो लास्ट वाले 2 स्टेप्स हैं वो दोनों ओ ऑफ के नहीं होने चाहिए वो बीच वाला ओ ऑफ एन कैसे हुआ था वो समझ नहीं है जी जी, आपने सॉर्ट कर लिया उसको ना? जी सर अब शॉर्ट करके जो मैंने लीस्ट 5 हैं वो उठाने हैं तो वो ओ ऑफ एन क्यों ओ ऑफ के नहीं होना चाहिए बस मैंने के उठाने हैं ना उसमें से ओके, आपने नहीं नहीं, आपने इसको अब जब सॉर्ट कर लिया, then एक मिनट, let me quickly go back to where I refer to these steps. Right. Okay. The first step क्या है? Right. In the first step, you find distances only. Okay. आपने distances find किए सिर्फ, आपने sorting नहीं की है. And so, right. So after the first step, you have a vector. In the vector, you have n distances. आपके पास एक यहाँ क्वांटिटी पड़ी है, एक यहाँ पड़ी है, यहाँ पड़ी है, यहाँ पड़ी, सॉर्टेड नहीं है, राइट? These are distances, right? Let's call it d1, d2. So each of d1, d3, d2, d3, d4, they're all scalars, values, numbers हैं, right? And d1 indicates आपके टेस्ट पॉइंट से फर्स्ट ट्रेनिंग डेटा का डिस्टेंस कितना डिस्टेंस है, d2 टेस्ट पॉइंट से सेकंड डेटा पॉइंट कितना डिस्टेंस है. And now from this array, you want to find the indices के 5 करीब तरीन 5 छोटे डिस्टेंसेस कहाँ पड़े हुए हैं. अब आप इस पूरे को ट्रेवर्स करेंगे बारी बारी. In fact, it is k times n, and since k is much smaller than n, so that's why we write it as n of the order n. But to be very precise, it is k times n. आप k times traverse कर रहे होंगे उसको, ठीक है? So it has 2 steps: finding k smaller distances, and then finding k data points in D with distance less than the k smaller distance. आपने पूरे को traverse करना है. ठीक है सर? जी सर ठीक Yeah, I think there's a question in the chat. So KNN algorithm does more computation on test rather than train. How and why? Why not training time? In fact, in KNN there is no training. There's a training about learning of the best choice of k, and we call it hyperparameter. But once you know, are you using 3NN or using 5NN, then there is no training. It's you only find you only have testing, so you only have prediction time. जी हाँ सर कि k के साथ हम लोग if we implement some sort of a distance के इस radius के अंदर पहले सर्च करें if there are k data points in this radius, तो फिर इससे computational complexity कम नहीं होनी चाहिए? दोबारा बताएं, दोबारा पूछें. सर if we like decide a radius to के Euclidean radius हम लोग भी decide कर लें Euclidean distance के साथ, फिर उस हिसाब से if we only search in that area और उसी एरिया से हम लोग वो जो KNN एल्गोरिथम है वो रन करें, k पॉइंट्स उस रेडियस से अंदर अगर आ जाएं तो फिर उस हिसाब से कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी कम नहीं होनी चाहिए? उस एरिया में आप सर्च कैसे करेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स उस एरिया के अंदर हैं? डिस्टेंस कंप्यूट करेंगे ना हर पॉइंट से. यस सर, सॉरी. हाँ, कॉम्प्लेक्सिटी वही आ गई ना. आपको हर पॉइंट से डिस्टेंस डिफाइन करना है, हर पॉइंट कितना दूर है मेरे टेस्ट पॉइंट से. एंड यस, फाइनली हम तो रेडी से
So आप उसको रेडियस कह लें, आप उसको कह लें कि you can also हम उसको k कह रहे हैं, k nearest neighbors, और you can say कि आपका रेडियस थ्रेशोल्ड है और उस रेडियस के जितने पॉइंट्स आ रहे हैं सारे ले लें वो. But to find the points inside radius, you need to compute distance from each point. ठीक है जी. Okay, so I have some questions which Sir, quick question, क्या आप Voronoi decision boundaries और error conversions एक दफा repeat कर सकते हैं? Voronoi boundaries or Error convergence. oh sure, बिल्कुल. I can spend time. Thank you. Okay, so the first is what are Voronoi partitions? Voronoi partitions are simply linear boundaries, linear partitioning of the space. अगर मैं इसको यहाँ पर explain करने की कोशिश करूँ आपको, for example, you have this space and I take 2 points. Say this is one and this is the other. Right? A Voronoi partition that separates these 2 points would be a line. इस लाइन के ऊपर वो पॉइंट्स होंगे सारे जो इन दोनों से इक्विडिस्टेंट हैं. Which means all the points on this side are closer to the circle and all the points on this side are closer to the square as compared to circle. Okay, so this is the concept of Voronoi partition, right? For example, if I add another circle, say star here, and then there would be another partition between circle and star, and another partition between square and star. Right? So, for example, between circle and star, you get something like this, and between star and square, you get something like this. And therefore, we can have overall partitioning would be something like this, and then we have like this. Jizain? सर इसके अंदर जो हमने लोकस टाइप चीज ड्रॉ की है, उस लोकस पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो इन तीनों बाकी स्टार सर्कल से इक्वल डिस्टेंट है या फिर दो दो के पेयर्स में इक्वल डिस्टेंट किए हैं आपने? बिकॉज जब आप ड्रॉ कर रहे थे तो फिर आपने एक ड्रॉ किया कंसीडरिंग 2 ऑफ देम, फिर आपने पीरियड ड्रॉ की कंसीडरिंग 2 ऑफ देम, तो लाइक दो करके इक्वल डिस्टेंट है या फिर सबसे इक्वल डिस्टेंट है? नहीं, उसमें ये है कि सो वी गेट द Voronoi partitions. बेसिकली होगा ये कि आपके पास एक multi you get a polygon, right? So you got n-sided polygon, और उस polygon के जो इर्द गिर्द जितने पॉइंट्स हैं उसके जितने भी नियरेस्ट नेबर्स हैं, right? उन सब नेबर्स से वो उस बाउंड्री का क्रॉस करते हैं तो you get to the next point, और जब उस बाउंड्री से पीछे रहते हैं तो you remain closest to the original point. For example, अगर हम इसकी बात करें, okay, जो ये बाउंड्रीज हैं, this is the boundary, this is the boundary, right? So जो ये वाली बाउंड्री है ये इन दो पॉइंट्स के दरमियान से आई है, right? और जो ये वाली बाउंड्री है, this is, maybe let me label it, right? Let's say 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, so for between test point जो दरमियान में है, इसका आप 1 से पार्टीशन निकालें, 1 की टेस्ट पॉइंट की 2 से निकालें और टेस्ट पॉइंट की 3 से निकालें, right? So you pick the one that is the minimum of either 1 or 2. For example, if I take this point is closest to 1, then 2 and 3 and to all other points, in fact. Similarly, if you take a point here, say test point के करीब ले लें आप, and this is closest to a test point as compared to 1, 2, 3, 4, 5 सबसे,
ठीक है सर. Okay. Okay, so that's how we create a Voronoi partitions. And in KNN, each Voronoi partition gets a label of that. जो उस partition का label assign हुआ है, उस point का label है. Every Voronoi partition gets that. Or associated with Voronoi partition, we define the concept of a decision boundary. In every classifier, whether it is KNN, whether it is हम और algorithm पढ़ेंगे, so we are always after a decision boundary. Decision boundary enables us to classify the data in future. हम उस decision boundary के base पे हम decide करेंगे कि हमने जो नया test point है उसको क्या label assign करना है, right? So this is in KNN using 1NN. Voronoi partition gives us a decision boundary, but if you move towards 2NN or 3N, 4N, this boundary gets smoother क्योंकि every time you talk about multiple neighbors. उसके बारे में एक और बात की थी, और किस पे बात करनी है मैंने? हनान क्या करते हो? Voronoi partition के अलावा there was some other Set base classifier and error convergence. base classifier, yeah. Optimal base classifier, right? Optimal हम base classifier पढ़ेंगे कि base classifier क्या होता है, लेकिन optimal base classifier क्या है? The best classifier you can have. So the best classifier you can have is if you already know the prior information. For example, हमने कहा कि हमारे पास if we assume that we already know probability of y given x, we can predict the most likely label as follows. Right? This is called maximum. If you know probability of y given x, right? So this is kind of maximal likelihood estimation. Okay, maximal likelihood कौन सा y है, right? और हम कहें कि अगर हमारे पास if we know this probability of y given x, for given x we can compute कि हर label की probability क्या होगी. If we have this classifier in hand, so what is the error rate or what's the misclassification rate for this classifier? Right? That would be simply 1 minus, okay, this is predicting something else, right? So 1 minus the probability of y star given x, right? So ये है error rate of base classifier. And let's talk about the error rate for 1NN. Right? So 1NN का हमने error rate prove किया कि वो क्या होता है? Okay, this is something this in worst case, right? In worst case, x and n approaches x जब n infinity को approach करता है asymptotically. So error for nearest neighbor classifier would be twice of this. और इसके अंदर जो पहली term है, this is probability of y given x, and since this is always less than or equal to 1, हम कहते हैं कि जो 1NN का जो convergence rate है, जो 1n का error rate है, that is less than or equal to twice of the error rate of optimal classifier. How do you interpret this? This is important, right? आपने कहा कि there's a bound on error rate of 1NN, and that bound is given by the twice of the error rate of the base classifier. कि आपके पास जो 1N classifier है वो सिर्फ factor of 2 words हो सकता है best possible classifier से, क्योंकि जो base classifier है that is the best classifier you can have, क्योंकि ये वो classifier है जो कि assume कर रहा है कि you have probability, you know probability of y given x. You have an hypothesis function that gives you this probability. This is the best classifier you can have, right? और 1n की probability है जो error rate है
वो less than or equal to twice of the error of the best classifier है, ठीक है. So do you want me to drive this? अगर इसमें derivation में कोई issue था तो I can also do that. No, sir. No issues in the derivation. ठीक है, great. जी Zain. सर ये कर क्यों रहे हैं, इसका फायदा क्या है? Oh, so we want to show के जो KNN है वो कितना बुरा है, या KNN की क्या error bound है, क्या KNN कितना बुरा हो सकता है. इससे पर इसमें हमारे पास जो पी डिस्ट्रीब्यूशन है एसेंशियली वो वी अज्यूम एट द स्टार्ट कि वो तो हमें पता है होती ही नहीं है, तो लाइक उसके ऊपर नहीं डिपेंड करता कि डिस्ट्रीब्यूशन वाइज वेरी करेगा ना, शायद कोई ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन हो जिस पे ये ना सही हो. हम assume करें कि हमें ये नहीं पता, हम ये नहीं कह रहे कि हमें पता है, हम कह रहे हैं अगर हमें पता होती, if we know the नहीं, we are not talking about joint distribution, I should clarify here, right? So ideally तो हम चाहते हैं कि we know probability of x and y, the joint distribution, right? So this is unknown, but if we know the conditional distribution, which is probability of y given x, if we know this, right, and this is called the best classifier, the base classifier, right? कि आप वो वाला वेरिएबल चूज कर लें जिसकी प्रोबेबिलिटी होने की सबसे ज्यादा है फॉर गिवन x, राइट. इसका जो एरर रेट है, राइट, KNN का जो एरर रेट है वो इसके एरर रेट को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, उससे हमेशा कम होगा. We have shown that there's a bound on error rate of 1NN. सर जी ये जो था 1NN के लिए एरर रेट हमने निकाला था, तो 2NN and more के लिए भी सिमिलर बाउंड हमारे पास आएगा. हाँ, सिमिलर बाउंड, हाँ, we can do similar derivation, लेकिन the derivation becomes very very tedious. So हम आपको शायद 2NN का assignment में देंगे 2NN करने के लिए, and we'll guide you how to derive that. हम करेंगे. Obviously. Also, sir, can you repeat principal component analysis? वो हमने पढ़ना है जी अभी. पीसी पढ़ेंगे अभी हमने पीसी नहीं पढ़ा. अभी हम पीसी भी पढ़ेंगे, हम और चीजें पढ़ेंगे. ऑल्सो सर वो लाइक वो जो एंड पे फास्ट वाला ट्री है, वो जब वो प्लॉट कर रहे थे आप ना, जब बना रहे थे तो वो इतना क्लियर नहीं हो रहा था बीच में बात है, बिकॉज वो बाइनरी ट्री के साथ कंफ्यूजन हो जा रही थी बार बार, तो वो एक दफा भी बता दीजिएगा. जी जी, अभी हम क्वेश्चन करते हैं उसके. लेट मी स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस व्हिच आई वांट टू रिव्यू फ्रॉम द प्रीवियस क्विज, और क्वेश्चंस थोड़े टीडियस वाले भी हम करते हैं अभी. लेट मी शेयर ट्यूटोरियल 2. Okay, let's start with simple multiple choice questions. True or false? In KNN algorithm, more time is spent on training as compared to testing. False. False होगा False, obviously, yeah. There's no training, right? क्योंकि इसमें there's no trend. Which of the following is true for KNN algorithm? Both. ठीक है जी. See, yeah, okay, thank you. What happens to variance and bias as K decreases in KNN, right? So as K Bias Variance decrease. increase. Variance increase, bias decrease. Bias. मैं कहता हूँ हैंड रेज कर लेते हैं ताकि वेरिएंस डिक्रीजेस और बायस डिक्रीजेस. सी कह रहे हैं आप? ओके, किसने हाथ खड़ा किया? जी आसिफ, आप बताइए. K डिक्रीज होगा तो वेरिएंस इंक्रीज होगी और बायस डिक्रीज होगी. Bias decrease होगी, variance increase होगी, right? Let me comment on this as well. There were some questions about bias variance trade-off. So I'm preparing notes for this, and I will also record a 5-minute video on bias and bias trade-off again. बहुत एक basic concept हम उसको I will try to illustrate again. लेकिन KNN के अंदर bias decrease कैसे होती है?
So when k is equal to 1, so बहुत minimal bias है, right? और जब k डिक्रीज करता है तो k इक्वल टू 1 के अंदर सबसे मिनिमम बायस है और वेरिएंस सबसे ज्यादा है, और when we increase k तो वेरिएंस कम होती जाती है और बायस बढ़ती जाती है, right? So in the question it says as k decreases in kn, तो वेरिएंस जो है वो बढ़ेगी और बायस कम हो जाएगी. Which of the following is true for kn classifiers? चैट में डी बिल्कुल ठीक है जी, बेहतरीन है. Okay. Which of the following decision metric is used for categorical variables? Hemming, बिल्कुल ठीक है. Great. शानदार है जी. One drawback of K tree is that it might miss some neighbors. True or false? It may miss some neighbors. That is the drawback of K trees. और हम उसको भी illustrate भी करते हैं कि वो वजह क्या है उसकी. Okay, okay, let's do once. एक क्वेश्चन सॉल्व भी करते हैं तो देखते हैं. How do we do this? Let us say we have a categorical data available in KN classification, and okay, how do you interpret this? कि हमारे पास we have 4 features for predicting different colors, right? And so we have this these are the values of features 0 0 0 1. Every feature can be a binary 1 or 0. और हमारे पास color white label है, उसके corresponding we have 2 points in the training data, and for white the features are 0 0 0 1. And similarly for orange label we have the values of feature are 1 1 0 0, and we have 3 such points in the training data, right? I hope this is clear. Data किस तरह है, right? Suppose you're provided with an unknown color defined with the vector 1 0 1 1. So we run the KN algorithm with k is equal to 3 using Hamming distance to predict the color. So the first step is we compute distance from each of the points in the training data. Okay, so what is given? 1 0 1 1. If you compare 1 0 1 1 with the features of white, we have 0 0 1 1. 0 0 sorry 0 0 0 1. Distance कौन सा यूज करेंगे हम? Hamming distance, right? इसकी वैल्यू क्या आएगी? How many mismatches do we have? सर 3 नहीं आएगी इसकी वैल्यू. Mismatch कितने हैं? 3. सर 2 नहीं नहीं, है सर 2 है, सॉरी. यस सर, मैं जनाब, ठीक है. Yeah. Similarly, pink के लिए क्या होगा? कितने mismatch हैं? So pink is 1 0 0 1. So this is given 1 0 1 1, and pink is 0 0 0 1.
एक्सक्यूज मी सर, क्या आप हैमिंग डिस्टेंस एक दफा एक्सप्लेन कर सकते हैं? आई थिंक मैंने लेक्चर्स में ये मिस कर दिया है। अच्छा, कुछ भी नहीं है, सिंपली 1 माइनस डेल्टा एक्स आई, टेस्ट पॉइंट आपके पास है एक्स डैश, कह लें उसको एक्स डैश आई, एंड सम ओवर आई इज इक्वल टू 1 to d। जितने मिसमैच होंगे उतनी आपके पास सम की वैल्यू आएगी, राइट। तो डेल्टा अगर एक्स आई डैश मैच कर रहे हैं तो 1 होगा, अगर मैच करें तो 1 माइनस 1 वुड बी 0, अगर मिसमैच है तो 1 ऐड हो जाएगा सम के अंदर। राइट, थैंक यू। ठीक है जी। क्योंकि सर मैंने यहाँ पे पूछना कि ये मैच किससे कर रहे हैं यहाँ पे, अगर आप ये एक्सप्लेन करते हैं। आप यहाँ पे लाइक आपका बेसिक है जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं अपने हर जी मेरे पास ये दिया हुआ है 1011 which is the test point, right? And now I'm comparing कि ये टेस्ट पॉइंट वाइट और पिंक और रेड से कितना कितना दूर है। So पिंक के लिए I have features 1001। If I compare these two, 1 और 1 मैच कर रहा है, 0 मैच कर रहा है, 1 मिस मैच है, 1 मैच है, it means the distance is 1, right? ठीक हो गया। केसेस। तो इसके आप हर बिट को कंपेयर कर रहे हैं और फिर उसके रेड लिहाज से से आप डिस्टेंस कितना होगा? should be 2। ऑरेंज से 3। yellow is I think 0 1 0 0, it's all 4। green को अगर हम देखें so 0 1 1 0, 1 2 3, ठीक है। ब्लू से कितना होगा? 2, और पर्पल से 1। so do we have computed distances? Now if we apply KNN, so we want to select the 3 nearest neighbors। 3 nearest neighbors के अंदर nearest neighbors कौन कौन से हैं? पिंक एंड पर्पल। or we have 1 pink in the data and we have 2 purple points in the data। it means the 3 nearest neighbors के अंदर एक pink है और 2 purple है। it means for 1011 को आप कौन सा लेवल असाइन करेंगे? purple, yeah, most frequent level। so कोई ऐसा है जो जिसने फॉलो नहीं किया इसको? सर इसकी समझ नहीं आई कि कैसे पर्पल, यानी पर्पल 2 है इस वजह से। जी आपने डिस्टेंस निकाल ली है, वही समझ आ गया आपको। अब आपने नियरेस्ट नेबर चूज कर लिए। नियरेस्ट नेबर आपने 3 चूज करने हैं क्योंकि a इज इक्वल टू 3 है, राइट। सो आपने 2 पर्पल चूज कर लिए और 1 पिंक ले लिया क्योंकि ये दोनों करीब तरीन है। and since we have 2 purple and 1 pink, in KNN we assign a label of the most frequent label, so and therefore we have assigned purple to the test point। ठीक हो गया जी? okay, if we want to we're given multiple points and we want to compute the prediction error, prediction error कैसे compute करेंगे? आप हर टेस्ट पॉइंट के लिए प्रेडिक्शन निकाल लेंगे? जी मोइस आप बताइए। सर मेरा क्वेश्चन प्रीवियस स्लाइड से था कि फॉर एग्जांपल हमारा k इज इक्वल टू 4 हो तो फिर हम कौन सा वाला अगला नेक्स्ट यूज करेंगे, मतलब कि कौन सी कैटेगरी को इंक्लूड करेंगे? 2 का डिस्टेंस मल्टीपल कैटेगरीज के साथ था तो हम कौन सा वाला नेक्स्ट इंक्लूड करेंगे? वाइट करेंगे, कोई और करेंगे? आप कोई भी कर सकते ये हैं। समझ नहीं आ रहा। हम कोई भी कर सकते हैं, जिसकी मेजोरिटी हो वो भी चूज कर सकते हैं, मतलब एज एन कोई या तो हमें फेवर करनी पड़ती है, फिर जिसका पहले कैलकुलेट किया उसको पहले कंसीडर करना चाहिए। नहीं, इसमें कोई फेवर नहीं है इसमें, बिकॉज द ओनली मैट्रिक यू हैव इज डिस्टेंस। सो यू हैव आपके पास आपका ब्लू भी चूज कर सकते हैं आप और रेड भी चूज कर सकते हैं और वाइट भी चूज कर सकते हैं। और सही है, वाइट में से वाइट चूज भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही है।
So Manahal is asking how we got distance briefly. Sure. For example, if we talk about distance for pink, right? So pink में हमारे पास क्या था? The labels are 1001. So this is 1011 is the test point, and 1001 are the features for which we have a pink label. And if we compare these two element component wise, feature wise, so 11 we don't have a mismatch, 00 we don't have a mismatch, 10 is the mismatch, and finally 11 में कोई mismatch नहीं है, and therefore we only have mismatch at one place. Therefore the distance, the Hamming distance would be 1 between pink and test point. Similarly, if we talk about say yellow, right? A yellow is 0100, and then we have 1011. If we say we have a mismatch at every along every feature, and therefore the distance is 4. K is equal to 4 में कर सकते हैं. Okay. You can also subtract the 2 and count the number of ones. Yeah, when you do subtraction, you have to take absolute as well. Then Hanan. minus n भी आ सकता है. Or you take XOR लेके ऐड कर उसको ऐड कर लें फिर. That's one way. ठीक है जी. Excuse me sir. जी जी. तो अगर यहाँ पर पिंक और पर्पल दोनों ही like अभी तो यहाँ पर पर्पल की मेजॉरिटी थी ना, but if K was equal to 4 और पिंक और पर्पल दोनों ही दो होते तो फिर what would I have done? टाई आ जाता ना. फिर क्या करते हैं हम? सर वो K-1 तो करते हैं, वो तो मुझे पता है, पर किस वाले को करते ये नहीं पता ना, फिर किस वाले को माइनस करते हैं. Yeah, if there's a tie between the two labels, you can assign any label. Yeah, by definition आप mode assign करते हैं. And if there's a tie, you can assign any label. ठीक है जी. Okay. ठीक है जी. Okay. Any other questions? Raise hand किसने किया हुआ? जी आसिफ. सर आपने बताया था कि h of x जिस वक्त मॉड होता है तो दो वैल्यूज भी यानी रिटर्न करता है. अगर हमारे पास दो लेबल हो एक क्लास के और दो लेबल हो अनदर क्लास के, तो मॉड तो एक ही वैल्यू देता है जो मोस्ट फ्रीक्वेंट होती है. हाँ, दोनों में टाई है ना, तो आप कोई भी रिटर्न कर सकते हैं. It all depends the way you program it. आप उसको इस तरह कोड इस तरह करें कि जो पहला आ रहा है उसको आप रिटर्न कर दें, या जो बाद में आ रहा है उसको रिटर्न कर दें. ठीक है जी. लेट्स डू अ क्विक एग्जांपल ऑफ KD ट्री. हम KD ट्री बना लेते हैं और okay, we're given this data and we want to construct KD tree. I can briefly review how do we construct KD tree. So idea बहुत simple है. It's like a binary tree, and you start from you first to pick the dimension along which you want to split the data. Right? For example, we want to construct KD tree and we split
first K1 feature along first X1, and then between X2 and X1 we keep on alternating. Let's say we use X1 or X1 we have to split करें, right? So and when you start sorting this, so you get 1, 2, 3. Sorry, we have 1, 1, 2, 3, 4, 5, 7. I hope I'm doing right. 8, and then you have 9. 12, 13. बाकी फिर बड़े हैं उससे. In total we have 16. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So along 9 you can split. Right? So the first node would be in the tree would be 9,31. ठीक है. So आपने क्या किया, आपने along x1 sort किया and you pick the median one, the middle one. जो median आ रहा है आप उसको pick कर लें और along that you split. Okay. अब कौन कौन से points left पे आएंगे? So 1 and 6 left पे आएंगे, 1 and 4 left पे आएंगे, and similarly you have 2 and 12, 3 and 8, 4, 20. Hang on. So these points would appear on the left hand side, or जो बाकी points हैं वो right पे आएंगे. Are you following this? No, sir. Okay. से दोबारा रिपीट कर दो. जी मैं बता देता हूँ, ठीक है. So हमने क्या किया, हमने so we have 12, 13, and then we have 14, we have 19, we have 21, we have. Excuse me, sir. जी. So just a slight bit of query, sir. अगर हमारे पास K2 से ज़्यादा हो जाता है, तो जो ट्री बनता है उसके चिल्ड्रन 3 होते हैं या फिर वो 3 डायमेंशनल ट्री, लाइक बिकॉज लाइक हम तो बाइनरी ट्री अज्यूम कर रहे हैं ना, सो उसमें लाइक फिर लाइक हाउ आर यू गोना कंस्ट्रक्ट दैट ट्री इफ वी हैव लाइक. जी आप पहले स्प्लिट करें along x1, then split करें along x2, then split करें along x3, and then you keep on x. ट्री बाइनरी होगा. ट्री बाइनरी होगा. अच्छा ठीक है, स्टेप्स बढ़ा देंगे. और सर हमारे पास जो डी है वो ज्यादा है एज कंपेयर. ठीक है, आई गेट योर पॉइंट. ठीक है समझ. थैंक यू. Great. 70, 19 and 47. So अगर हमने along x1 sort करें points को, तो we have this is a sorted points. ऐसी. So ये सर 31 मिस कर दिया हमने. Thank you जी. अच्छी बात है. You're vigilant. Great. Thank you. And if you see the middle one is 9. हमने along x1 sort किए और हमने कहा जो median है, जो middle point है वो 9 है. So along this point 9 and 31, we split data into 2 parts. जहां उन जो points जिनका x1 less than 9 है, हम उसको लेफ्ट पे ले आते हैं सारे पॉइंट्स को, और जिनका x1 greater than 9 है वो सारे राइट पे आ जाएंगे. ठीक है. It means the points which I have labeled in circles, so these points would appear on the left hand side. And now we have these points. Next splitting dimension is along x2. Right? So अगर आप ये points देखें और इनको sort करें, you have इनका x2. So you have 1, you have 4, 6,
8, 12, 20, 20, 21, 23, and that's it probably. Yeah. जी question, Hamza? जी सर मैंने ये पूछना कि फर्दर जो आपने पहले रूट नोड बनाते हैं सर, उसके लिए आप सारे डाटा को x1 x2 4 डायमेंशंस को पहले आप सेट करके ग्रुप करते हैं। दोबारा पूछें। सर आप यहाँ पे दोनों सेट्स को मतलब जैसे कि 1 6 है आपका पहला लेवल पॉइंट, तो आप उन दोनों को यूज करते हैं टू मेक योर रूट, मतलब आप रूट यहाँ पे सिलेक्ट कैसे करें? सिर्फ आप x1 को देख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन स्पेसिफाई करते हो कि अच्छा मैंने फर्स्ट डायमेंशन सिर्फ देखनी है यहाँ पे, और फिर आप उसका मीडियन निकाल दो, या फिर आप x1 और x2 दोनों को अनग्रुप डाटा उनका लेते हो, फिर उसका मीडियन निकाल के देन यू स्पेसिफाई द रूट इन व्हिच डायमेंशन दैट यू आर टेकिंग। So at one point in time, at separating at every node, so we scan along one dimension. For the top planet node, I'm starting with x1 feature only. जी मोइस। अच्छा सर, आई हैव अ क्वेश्चन कि फॉर एग्जांपल अभी आपने x2 पे स्प्लिट किया, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम कैंसिल आउट करें टर्म्स तो 2 टर्म्स आती है मिडिल में, क्योंकि इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, तो हम इस केस में मीडियन कोई एक डिसाइड कर लेते हैं और कंसिस्टेंटली वही रखते हैं, मतलब कि लेफ्ट वाली अगर हम चूज किए शुरू में तो फिर हम लेफ्ट वाली ही रखेंगे अगले लेवल में भी और उससे अगले लेवल में भी। You can devise a strategy and that has to be consistent throughout each level, मतलब कि फॉर एग्जांपल आपने ऊपर वाले में भी आई थिंक सो लेफ्ट वाला चूज किया क्योंकि 16 टर्म थी तो 2 टर्म्स आनी थी मिडिल में मोस्ट प्रोबेबली। as long as you are consistent, as you अगर आप consistency maintain करेंगे, so that won't make a difference when you're searching for the nearest neighbors once you have the tree. सही है सर। if we have an odd number of terms then we would get a single term in between, but even number of terms में usually 2 आ जाती है। बिल्कुल 2 आती हैं, और you can select you can devise a strategy कि आप हमेशा left करेंगे pick, and if you follow it consistently and once you have the tree and you search for nearest neighbors, you won't face any inconsistencies because you were consistent during the construction of a tree. Okay sir, fine. Great. Acha, फिर along next splitting is along x2, right? So along x2 we have these points on the left hand side. अगर आप उसको देखें तो we have 1 2 3 4 5 6 7 8. So middle one में you have 8 and 12. If you pick the left hand side again, so you get this label would be 8 के साथ क्या था 8 and 3. And सर 16 मिस नहीं कर दिया हमने? मिस कर दिया जी 16 और आगे 31 39 भी है। नहीं 16 तो नहीं आएगा ना, 16 क्यों आएगा? क्योंकि 16 लेफ्ट हैंड पे नहीं आया ना, 16 राइट हैंड साइड पे गया है। ओके ठीक है बेटा जी। ये जो आपने रेड से लिखा हुआ है तो x1 है ना, या आपने इसको जो मतलब ये रेड वाला x2 की वैल्यू जी x2 है, ये वो पॉइंट्स हैं, ये x2 for the points appeared on the left after first step. सर जो आप लेफ्ट पे गए होंगे, ये आपने कंपैरिजन उसके 9 से जो छोटे हैं उनको आप लेफ्ट पे जो मैंने सर्कल किए हैं ना ऊपर पॉइंट्स, उनका मैंने x नीचे लिखा, उनका मैंने x सॉर्ट किया जी। नहीं तो सर जो नीचे आपने ये जो बॉक्स डिसाइड करना है कि जो हमारे रूट के लेफ्ट पे जो फर्स्ट नोड होगी वो आपने कैसे डिसाइड की, वो दोबारा बता सकते हैं? जी x2 के हिसाब से मैंने सॉर्ट किया इसको। ये सारे पॉइंट्स, जो ये x2 लिखा हुआ है उन पॉइंट्स का जो कि लेफ्ट पे अपीयर हुए थे आफ्टर द फर्स्ट स्प्लिटिंग, मैंने इनका x2 सॉर्ट कर लिया, और सॉर्ट करने के बाद जो मिडिल में 2 आए 8 और 12, आई पिक द वन विद जो लेफ्ट साइड पे आया, और फिर मैंने मैंने बेसिकली फिर 8 और 3 को यूज किया
इस वाले को पार्टीशनिंग के लिए, राइट? अब 1 5 4 1 and 6 1 they would be appearing on the left hand side. यहाँ पे बेसिकली आ रहा होगा 1 5 सर वो 0.38 है, आपने 83 लिख दिया आई गेस। तो ये आप सारे बैकवर्ड देख रहे हैं वैसे पॉइंट्स 931 के या अच्छा जी 3x 38 वो भी 51 नहीं है 15 की जगह ले लेना आप, सॉरी। Yeah, 5 1 and then we have 1 4 and then we have 1 6। ठीक है, अब मुझे यहाँ कौन सी नोट आएगी? Now spread along x1, right? So we have 5 1 and 1, so you can take either 1 4 or 1 6. Say you select 1 4 here, and then you have the x2 पे spread करेंगे आप, तो you get जरूरत नहीं उसकी, so 1 4 पे आपने कर दिया ऑलरेडी, तो 1 6 यहाँ पे आ जाएगा और 5 1 यहाँ, and that's how you construct the whole tree। ठीक है, पहले x1 पे स्प्लिट किया, फिर x2 पे, फिर x1 पे, और उसके बाद जरूरत नहीं पड़ी आपको x2 पे करने की, ऑलरेडी एक एक पॉइंट ही बच गया सिर्फ। ठीक है जी। So any questions about this? सर यहाँ पर अगर हमारे पास ये x1 x2 के साथ x3 होता, तो आप पहला स्प्लिट किसी एक का लाते, फिर दूसरा लाते, फिर तीसरा लाते, and then you would have repeated। तो सर अगर यहाँ पर हमारे पास तीन डायमेंशंस होती हैं x1 x2 and x3, तो आप पहला स्प्लिट x1 का लाते हैं, फिर x2 का लाते हैं, फिर x3 का लाते हैं, या फिर इनकी जो स्प्लिट की ऑर्डरिंग है ये किसकी मर्जी से हो रही है? लाइक कंसेक्यूटिव दो सेम भी आ सकते हैं, लाइक मैं दो दफा ये हाँ, there are two, आप sequentially भी कर सकते हैं x1 x2 x3, and at times when we have hundreds of dimensions we select the sibling dimension randomly। हम इसको randomly choose कर रहे होते हैं कि आप you can select आपने कौन सी dimension choose करनी है, randomly choose कर लें। आंसर इसका हमें जब आंसर निकालना होता है तो हाउ डू वी ट्रेस द ट्री डाउन? लाइक कैसे शुरू करते हैं? लाइक कोई भी टेस्ट पॉइंट मेरे पास अब आ गया, आई नीड टू फाइंड कि कौन सा इसका क्या क्लास है इसकी, तो इसको रीड you want nearest neighbor, right? So yes sir, आप फिर for example you get the point, say some point 5 6, you compare with 931, आप देखते हैं कि उसका x1 किससे मैच कर रहा है, so and you start traversing left right left right left right। आप बजाय कि आप हर से सर्च करें, आप नंबर ऑफ जो कंपैरिजंस हैं वो कम हो जाते हैं। दैट्स द होल आइडिया। वो जो आप कोई पॉइंट्स मिस हो जाती हैं वो कैसे होते हैं फिर? लाइक हम तो सब कुछ टीम सब कुछ तो इनपुट कर रहे हैं, मिस कैसे होगा? उसमें एग्जांपल स्टेट किया हुआ है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपने ट्रैवर्सिंग की है, आप स्प्लिटिंग कर रहे हैं अलॉन्ग डायमेंशन, आप डिस्टेंस स्प्लिट नहीं कर रहे हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई क्लोजेस्ट पॉइंट हो वो लेफ्ट पे चला गया है। सही ठीक है मानूर जी बेटा। सर मुझे समझ नहीं आया कि जो लास्ट 3 वाले हैं, ये 1 4 1 6 5 1, इनको स्प्लिट कैसे किया है? along x1, राइट। मैंने जब along x1 सॉर्ट किया इसका, तो मेरे पास आ गया 1 1 और 5। ठीक है, तो मैंने 1 4 को मिडिल वाले को रख लिया और 1 6 वाले को लेफ्ट पे कर दिया और 5 1 वाले को राइट पे कर दिया। ठीक है सर। ठीक है बेटा। ठीक है जी, आप लोगों को क्विज है, स्टार्ट 10:30 पे स्टार्ट होना था, सो द क्विज 10 minutes and you have time until 10:45 to complete the quiz।
ठीक है बेटा, सो आप लोग क्विज करें. सो आई विल बी अराउंड फ्रॉम 11 to 12 as well. सर आपने जो डेफिनेशन में बताया था एक्स कामा एक्स प्राइम, तो एक्स क्या था वहां पे? एक्स कॉमा प्राइम जी, एक एक्स टेस्ट कामा पॉइंट एक्स जी, प्राइम, एक टेस्ट पॉइंट है और एक आपके पास ट्रेनिंग का पॉइंट है. इनमें से कौन सा टेस्ट पॉइंट है? यानी स्टार्ट में जो डेफिनेशन थी ना, हाँ उसमें आप अच्छा वो शुरू वाली है. अब यासिन मेरे साथ क्विज कर लें तो इसको हम बाद में एड्रेस कर लेंगे, मैं अवेलेबल हूँ. ओके ठीक है बेटा, ठीक है.